Alright, hi everybody, welcome to my channel. And I'll just begin with a small introduction about myself. So, my name is Indeep Chattopadhyay. I'm a first year of MBBS student at Rampurhat Government Medical College and Hospital, West Bengal. This video is going to be about the documents you require for counseling. So, if this video helps you, make sure you do subscribe the channel and share it with your friends because they might need this. And my only purpose for making this video is because I faced this issue when I was counseling last year. मेरे पास उतना अच्छे से idea नहीं था about what are the documents, how to prepare the documents, कहाँ से like where you will get the pro forma and everything. So I have tried to mention all the things which are required and to my best possibility. So I hope this really helps and let's get started. So before we begin with the documents which are required for the counseling, मैं just take schematic way I'll just show you what is the process of the counseling at a glance, right? So just for you to know, NTA is the body for conducting the exam. But after the exam has been conducted, NTA has no more to put into this process. Counseling is done by the Medical Counseling Committee. It's called MCC, and it is state specific for state counseling or all India के लिए it's MCC. So state में क्योंकि I got selected in a West Bengal Medical College and I am from West Bengal, so I will go about the process required in West Bengal. So it might be helpful to you guys as well. All right. So first we have to register ourselves in this website wbmcc.nic.in. इसके बाद फीस पेमेंट करने के बाद you will get a slip. This is very important. You have to keep this for your future uses. Next, we have to log into this website. जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे we'll get a user ID and a password. All right. User ID मिलता है और एक password मिलता है. We have to use this to log in. Post logging in हम लोग का एक टाइम दिया जाता है जो अभी तक वेस्ट बंगाल के साइट पे आया नहीं है. आपको इसी साइट में आपको इन्फो मिलता रहेगा अबाउट द डेट्स. तो एक पर्टिकुलर डेट में आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होता है. ठीक है. इट्स अ स्पैन ऑफ अप्रोक्सीमेटली मे बी 5 days और 6 days जो मेरे टाइम पे था. And I'll keep adding the screenshots and the snaps which are required at the end of the video. So आप लोग पूरा बने रहिएगा. लास्ट में आप लोग को जो भी चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है वो लास्ट तक एटलीस्ट हो जाना चाहिए. आई एम श्योर. अगला काउंसलिंग कमिटी से आपको सीट अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, कैटेगरी एंड रैंक. दैट इज कॉल्ड सीट अलॉटमेंट. एंड आफ्टर सीट अलॉटमेंट यू हैव टू रिपोर्ट टू दैट कॉलेज विद इन द गिवन टाइम फ्रेम. हम लोग के टाइम पे 3 से 4 दिन का टाइम था, राइट. सो यू हैव टू रिपोर्ट टू द कॉलेज विथ योर डॉक्यूमेंट्स. इस स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट लगता है. इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी आपका डॉक्यूमेंट लगता है, बट यू आर एट होम सो यू आर एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. बट जब आप रिपोर्ट कर रहे हो अलॉटेड कॉलेज में, you are not at the comfort of your house, so you need to have a a point list about what documents you need to carry and आपको कौन से documents चाहिए. So this is the step which is most crucial because अगर आप लोग report नहीं करते हो then आपका college cancel हो जाता है. You will not be allotted the seat. Okay. So we'll go into the documents now and I hope you've understood this process. So let's go into the documents. So let's look into the documents required for NEET counseling one by one. And as you can see, I've highlighted a few because मुझे लगता है ये कुछ important documents है. And these are the most confusing ones as well because मेरे time पे इनको लेके मुझे बहुत confusion हुआ था how to prepare them and stuff. So I'll just brush through these points one by one. All right. I hope this helps. So first point is 10+2 mark sheet. As you all know, the mark sheet you'll require. Second is the pass certificate. Right. इसके साथ आपको एक और चीज लगता है is the migration certificate. I'll just write the abbreviations MC. Right. Next is ID proof which you will be requiring. So ID, you can either use your Aadhaar card or your voter ID card or your driving license. But I will say that you go with Aadhaar card because this is more of a PAN recognized ID proof, right? You just go with Aadhaar card. And next up we have the photo. Photo में I will say कि यार आप at least 10 to 15 copies carry करो. 10 to 15 copies minimum. It's good if you have 20. बिकॉज क्या है कभी आप खो देते हो, कभी आपको कुछ मिलता नहीं है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव रिप्लेसमेंट, राइट. एंड इट शुड बी पासपोर्ट साइज फोटोज. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव the caste certificate. This is optional only for the people who are using their caste like SC, ST, OBC, EWS, etc. Right.
I am a general student, so I don't have much idea about the generation of the certificate, but all I can guide you regarding this is आपको इसका जो प्रोफॉर्मा है, जो इसका फॉर्म है, वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा. As mentioned earlier, wbmcc.nic.in पे आपको इसका प्रोफॉर्मा मिल जाएगा. Alright. Next is the counseling fees payment slip. तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो नीट के लिए WBMCC में काउंसलिंग का, तब आपको एक फीस पेमेंट करना पड़ता है. Right, there's a particular token amount which you have to pay. They'll give you a slip in return, right? You have to keep that because it's really, really important. I cannot stress enough how this is really important. All right, so you keep that. Next is the NEET admit card and the scorecard. Regardless to say, right, the scorecard, which is the most important scorecard of your life as of now, right? So these two are very important. And for the admit card, I will say कि आप remember करो कि यार आपको fill करना होता है fingerprint and signature के साथ. जैसे आप नीट के लिए गए थे, आप वैसे ही करके उसको जाना, because that just makes it a bit better, right? All right. So अगला है medical certificate. So see, medical certificate, there are a few points I would like to make because a lot of people are confused about this. So ये कहाँ से मिलता है? That was the first point which people have, right? You will get it in the site. As mentioned earlier, I'm still writing it once again over here. Right, it's a wbmcc.nic.in. इस साइट पे आपको मिल जाएगा. So I'll mention the links below in the description. So just go and check it. Right? आपको क्या करना है यार, उसको आपको प्रिंट आउट लेना होता है and you have to get it validated. आपको उसको fill करना पड़ता है. Right? Filled by whom? You have to fill this form by a registered practitioner under WBUHS. Very important to know. You have to get this filled by a practitioner who registered, जिसके पास registered number है, वहां से आपको fill कराना पड़ता है. This is required. Why is it required? For proving that you're medically fit to continue this course academically and physically, right? Okay. Coming to the next point, it's a domicile certificate. So domicile certificate is nothing but a proof that you are eligible for the state quota counseling, right, in your state. So there are three types. I'm not going to the detail of this part because that will take a lot of time. So if you guys want a video dedicated on the domicile, you can just mention it in the comment sections below and I'll just take that into consideration. All right. So ये तीनों type का होता है, A1, A2 and B, right? So that I'll just mention in the other video if you guys want me to. Next, we have the PH certificate, the handicap certificate, but this is again out of my knowledge because I have no idea about this. Just make sure that if you know anybody of this sort, then you can talk to them about it, or there are a lot of people out there who have given information regarding this, so you can take it from there. But you would require this if you fall into this category, so you will require this. Is optional again. Next is the allotment letter. तो आपको ये मिलता है, जैसे कि हम लोग ने स्कीम में देखा, there is a choice locking and after that the seat allotment phenomena. So that seat allotment जब आपका होता है, उसके लिए आपको एक लेटर दिया जाता है कि यार आप इस कॉलेज में अलॉटेड हुए हो. So that you have to take a printout and that is important for you to carry. And then you have the age proof. Age proof के लिए या तो आप class 10th marksheet use कर सकते हो या आप birth certificate use कर सकते हो. But I would say that you go with the class 10th marksheet, right? Because all these documents which I'm talking about, majorly you have to submit them all to the college. So क्योंकि आप submit कर रहे हो, birth certificate थोड़ा और important document है. So I would say go with class 10th marksheet, right? All right. And the last and foremost is your bond paper, जिसको लेके बहुत लोगों का डाउट होता है. I'll just make sure that I can rush through the points. The first point is कहाँ से मिलता है? It's again the same, WBMCC. यहाँ से आपको एक प्रोफार्मा मिलता है, right? You get the proforma from there. And then there are two types of bond papers generally which is used in the medical colleges, और भी ज़्यादा होते हैं, just for the sake of it. 10, right? There's one 10 rupee bond paper and there's a 20 rupee bond paper. Barring private colleges because वहाँ पे जो amount लगता है that is a bit more as far as I remember. So 10 or 20 rupees. So the main point of concern is how do we make it?
सो जनरली जो प्रोफॉर्मा होता है वो आपको वेबसाइट से मिलता है. यू डाउनलोड दैट, यू पुट इट इन MS Word, ठीक है, एंड आप बाई अ बॉन्ड पेपर and you put that bond paper in the printer and you print the proforma on the bond paper. ठीक है, सो लेट्स से बॉन्ड पेपर में यहाँ पे नोट जो है 10 रुपी लिखा हुआ है. दिस इज द A4 शीट, राइट. तो आप वर्ड में उसको कैसे सेट करते हो कि आपका जो राइटिंग है वो यहाँ से यहाँ तक आता है प्रोफॉर्मा. दिस इज द होल पॉइंट ऑफ इट. ओके, सो जब आपका ये हो जाता है उसके बाद यू नीड अ विटनेस. सो यू नीड टू साइन ओवर हियर एंड यू नो द लीगल ऑफिसर ओवर हियर कैन साइन. So you'll get the details in the proforma itself. That is very easily understandable. Now the point is, how do we know कि यार कौन से कॉलेज में कौन सा बॉन्ड पेपर लगता है, राइट? बिकॉज हो सकता है मेरा किसी और कॉलेज में हो जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन निकलता है WBMCC से कुछ दिन पहले. सो फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड आई वुड से आप दोनों ही बना के रखो, 10 as well as 20. आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आप कोई भी लगे यू कैन प्रोड्यूस इट ड्यूरिंग द नीड, राइट? बिकॉज जनरली गवर्नमेंट में 20 से ज़्यादा नहीं लगता है. सो जस्ट फॉर सेफ्टी. एंड एक और चीज बताना चाहूंगा दैट कॉलेजेस में जनरली जितना, मान लीजिए किसी कॉलेज में 20 रुपीज का बॉन्ड पेपर थ्रेश होल्ड है, तो अगर आप 50 रुपीज में भी कराते हो सो दे विल एक्सेप्ट द बॉन्ड. बट अगर आप 10 में कराते हो जो कि 10 20 से कम है तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, 50 विल बी एक्सेप्टेड. ये मैंने कब बोला? ये मैंने बोला जबकि 20 थ्रेश होल्ड है, राइट? सो जस्ट रिमेंबर दीज फ्यू पॉइंट, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर आई सपोज. So these are all the documents you require to sum up, right? We'll go to the next part of the video and I'll just give you a small tip or advice according to my experience. Alright guys, so summing it up before we go to the next part of the video where you see the pictures of the documents visually, these are a few points I would like to make, and this is important to some extent because this will help you to avoid any last minute rush. So in case you lose a document or you cannot find it at the last moment, you should not be scared and you should have a replacement. So for that, I would suggest use technology to its best. Keep a soft copy of all these documents, maybe in your drive or maybe iCloud, right? Because अगर आपके पास वो रहेगा, so if you in case misplace any of the documents, so आप जाके किसी भी साइबर कैफे से उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो. So आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, right? Always have options. Second point is, after you have a soft copy, you should have photocopies done of all these documents, right? Minimum 10 copies I would suggest जो मैंने करवाई थी, and 10 copies should be self attested. What do you mean by self attested? You have to sign the document after taking a photocopy, right? Or you call it Xerox. तो उसको self attest करके रखना because ये लगेंगी. Yeah, I can say that 10 copies maybe you used only maybe 5 or let's say 4, but it's always good to have extra, right? Because कहीं पे भी कुछ भी लगता है in any college, in any part of the counseling process, you lose some of the copies. So you keep them arranged, right? And carry a file, maybe two files, okay? One for the originals and one for the photocopy. This is very important. And this will help you to segregate between and just organize your work. I think this will be it, guys. And all the best for your counseling. And those who have qualified the exam this year, lots of congratulations and best wishes to you and your family. Congratulations, guys. So make sure you watch the video till the end and see the pictures to avoid any doubts. Alright, guys, thank you so much for pulling it till here. And I'm thankful that you guys can bear with me. So let's get straight to it. This is the bond paper, right? This is how it looks. So this is a 10 rupee bond paper, as you can see, right? ये 20 रुपीज़ का भी होता है, 50 रुपीज़ का भी होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा खरीद रहे हो. एंड ये जो पोर्शन है यहाँ पे बेसिकली आपका प्रिंटिंग पोर्शन या राइटिंग पोर्शन रहता है जहाँ पे आप प्रोफॉर्मा प्रिंट कराते हो. प्रोफॉर्मा कहाँ से मिलता है आपको? You get it from WBMCC. How it looks, don't worry, I'll show it to you in a bit when we do the live demo, right? फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको ये कहाँ पे मिलता है. So आइए मेरे साथ इस पिक्चर में. So see this picture. This is a screenshot of the WBMCC site, right? And if I zoom into it a bit,
यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है मेडिकल फिटनेस परफॉर्मेंस, इसके बारे में हम लोग ने बात करी हुई है ऑलरेडी। एंड अगर हम लोग और भी नीचे जाते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट में, as you can see here, I'll mark this with a red color. So यहाँ पे आपको दिख रहा है domicile performer. You can also find the EWS performer. You can also find the bond performer, right? तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूज एंड इवेंट्स पे, एंड हाउ इट लुक्स लाइक विल शो इट इन द लाइव डेमो। तो आइए देखते हैं लाइव डेमो। ओके, सो अगर आप लोग wbmcc.nic.in सर्च करते हो, सो यू विल गेट दिस वेबसाइट, एंड देन यू हैव टू टैप ऑन यूजी मेडिकल काउंसलिंग, राइट। इसके बाद आपके पास ये साइट खुल जाएगा, एंड जैसा कि मैंने कहा था, आपको लेफ्ट में दिख रहा है एनरोलमेंट, फी पेमेंट, स्लिप जनरेशन, राइट। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फी पेमेंट होगा एंड स्लिप जनरेट होगा, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी हुई है। सो नाउ कमिंग टू द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, इफ यू सी न्यूज एंड इवेंट्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोफार्मा, राइट। यहाँ पे धीरे धीरे जो ये स्क्रॉल हो रहा है, आपको वेट करना है, राइट। एंड वंस यू वेट यू कैन फाइंड दैट यहाँ पे मेडिकल प्रोफार्मा आएगा, एग्जैक्टली। सो वी हैव गॉट द मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा, सो वील ओपन इट। दिस इज हाउ द मेडिकल प्रोफार्मा लुक्स गाइस। सो यहाँ से आप लोग इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को, राइट। एंड यू हैव टू गेट दिस फिल्ड बाय अ रजिस्टर्ड WBHS प्रैक्टिशनर, राइट। यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, इसको केयरफुली फिलअप करना। कमिंग बैक टू द साइट, आपको वेट करना है। Now I'll scroll up further and you can find out that there will be the domicile performer and the bond performer which we're looking for. So let's wait for it, guys. So we see domicile performer. Let's click on that. Now this is the window which opens. It's a PDF, so you can download this as well. Performa A1, A2 and B. आपको जो भी प्रिंट आउट कराना है आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, right? And dedicated video on the proforma, the various types and its uses, कहाँ से आप साइन करा सकते हो, it will be made separately as a video because otherwise video length बहुत बड़ा हो जाएगा, right? So going back to the main side again, this is a bond format UG, as you can see just below domicile, so we'll check that as well. So this is the part of the bond which will be printed below the 10 rupee note on the bond paper, all right? ये आपको एक वर्ड में लेके जाना है एंड यू हैव टू प्रिंट इट आउट दैट वे, थोड़ा साइज करके एंड थोड़ा वो करके, किसी भी साइबर कैफे में आप जाओगे वो कर देंगे, एंड इफ यू कैन डू इट योरसेल्फ, वेल एंड गुड। एज यू कैन सी बॉटम लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन, सिग्नेचर ऑफ विटनेस, एज आई टोल्ड यू, राइट। ये सब फिलअप करना होता है। इट्स अ 1 लाख रुपी बॉन्ड, एंड इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो मैं आप पे बना दूंगा अगर आप लोग चाहो तो, सो यू गाइस कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स, राइट। सो कमिंग बैक टू द मेन स्क्रीन नाउ, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द साइट जहाँ से आपको ये सब प्रोफार्मा मिलता है, बट डोंट डाउनलोड इट राइट नाउ बिकॉज इसका एक डेट होता है। दिस इज फॉर द 2020 बैच, आप लोग क्योंकि 2021 बैच हो इसीलिए अभी आप लोग डाउनलोड मत कीजिए। जैसे आपके लिए ये पोर्टल ओपन होगा, यू गाइस कैन गो एंड easily download it for yourselves. All right, I hope this was helpful. Okay guys, thank you so much for watching this video. This brings me to the end of this video. You can check out the description box or the link to my Instagram account and you can ask any doubts you have in your mind, right? And there's one of my friend, his name is Niladri Majumdar, right? I'll give his channel link in the description box as well. He's making amazing videos, you should check him out, and he's into a lot of videography and stuff. So I insist you guys should go and watch his content. It's worth watching. And all the best for your counseling, guys. Thank you for watching this video once again. And make sure you do subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.